क्विज वगैरह है सर कैसे? नहीं, आप देखना, वी आर लाइव। ओके, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू 64th सेशन ऑफ आवर एक्सेल क्वेरी सेशन। दो दो हफ्ते से मैं मिस कर रहा हूं और आज इसीलिए मैं कहीं पर भी होकर मैं अपने इस एक्सेल की चौपाल को फिर से ज्वाइन करना चाह रहा था। तो इसीलिए आज आई आई रियली मिस दैट दिस टू सेशन एंड आई होप कि इन दो सेशन में भी जो हमने आप जो मैंने मिस किया उसमें आप लोगों ने जरूर बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी एक्सेल की चौपाल, अपनी इस एक्सेल की फैमिली से, जिसमें एक्सेल के इतने सारे एंथुसियास्ट हमारे साथ जुड़े हैं। मिलिंद कपाड़िया जी हमारे साथ हैं, संजय जी हमारे साथ हैं और आई थिंक राकेश जी, प्रेम जी भी जल्दी हमारे साथ जुड़ रहे होंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की चौपाल, और देखते हैं कि आज हम क्या नया सीख सकते हैं या किसी की हेल्प किस तरह से हम कर सकते हैं। सो आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू टुडे ऑन जूम एज वेल एज ऑन यूट्यूब, and I really welcome our mentor, our the person who really motivates us, who keep on, he's the definition of consistency for me, जिनकी जब से कोरोना लॉकडाउन लगा है उनकी योगा सेशन 500 से ऊपर हो गए, एक दिन भी मिस नहीं किया। और मैं जानता हूं कि सर पता नहीं कहां कहां होते हैं और कैसी कैसी सिचुएशन में वो अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ते। सेम वे से 64th एक्सेल क्वेरी सेशन, जिसे हम एक्सेल की चौपाल बोलते हैं, ये भी सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत से, उनकी लगन से ही हुआ है। तो आई रियली वेलकम विजय अग्रवाल सर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट एंड व्यूअर एंड फ्रॉम माय साइड। सो ओवर टू यू सर। Thank you, Vijay bhai. And really, we were also missing you for last 2 weeks. So it's always great to have all the Excel enthusiasts. So really, once again, I welcome all of you on this Chopal. So let's start today's session. And I'm sure we are going to have a lot of new learning today. And like always, I would like to have first any query, like if we are going to have from the participants who are connected on Zoom. So because they have spared time, they are on Zoom, so they can share their query. They can also like show their file. So I would like to have some queries from the colleagues so who are online right now, and then later on maybe we can have some of the queries which we are having. So any of you is having any query, so maybe we can start with that. So we have Sanjay ji, Shiv Kumaran ji, Subrata ji, Vaishali ji, Hardik Shah. So anybody, if you have any query, then as said, yes, we would love to tackle your query first, and then for the other participant. प्रेम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेलकम प्रेम जी। So there is a one person who has joined through YouTube. His name is Ram Sumer, and he said that Ram Sumer, like he has sent me one query, so I am having that query. So it's a not a some big query. It's very easy, like very like query. So that's I can take. So I am having that query with me right now. So maybe we can start with that query. So it's not that something very like big query or something. So that's why I thought. So let me share my screen. Are you able to see my screen? Yes, sir. Okay. So this is a query which I got from Ram Smirji. I have a monthly report and I want to make automatic separate sheets of sale and return. So like this is the file which I got from Ram Smirji. This is the monthly data. So this is the GST data, seller GSTIN number, order ID, order item ID, FSN, SKU. Like there are so many columns are there. So more than I can say, like it's around more than 50 columns are there. So out of these like columns, maybe what he wants, that separate report for sale and separate report for return. So based on this data, he wants separate report, like column wise, whatever columns he wants to have, whatever things he wants to have. So that thing actually he wants to have this. So I written the
reply also that it can be very easily done with the filter formula in Excel 365. So I'm not sure which version he is having, but yes, if we are having Excel 365, Microsoft 365, so this is very easy and dynamic also. So if our data is going to change, or if we are going to increase our data, decrease our data, immediately we are going to get the results and it is going to be updated. So no like dragging of the formula, nothing we have to do, no refresh, nothing, just single formula in single cell, like we can put it and we are going to have all the data on that. So maybe some of you, like if we want to take that, okay, how to put the filter formula from the participants who are connected on Zoom, so they can take this query, like answer this, and also like if you want to, I'm sure that filter, like I had a workshop on filter, masterclass on filter. So these type of query that we have covered in filter, this masterclass that is available on our website also. So even like some of you are new, so you can also go and watch that this course masterclass on filter. Around 3 hours course is there. Yes. Okay. So Rakesh let ji, me ask. namaskar. नमस्कार जी, नमस्कार राकेश जी, वेरी गुड इवनिंग सर। नमस्कार नमस्कार। विजय गुप्ता जी, ये बात चलेगी नहीं वैसे, आप दो दिन 2 बार एब्सेंट हो गए लगातार। दिस इज नॉट फेयर, नॉट एक्सेप्टेबल। सारे लोग मिस करते हैं आपको। रियली सॉरी सर। मैं खुद जानता हूँ सर मैं कितना मिस करता हूँ, बिकॉज आगे के लिए माफी अलाउड नहीं है आपको, ख्याल रखना। नहीं सर, आई डेफिनेटली आई विल नॉट मिस। जी प्लीज कंटिन्यू जी। सॉरी फॉर ज्वाइनिंग लेट, प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, राम सुमेर जी कह रहे हैं कि उनके पास ऑफिस 2016 है। नहीं तो ऑफिस 2016 के अंदर तो इसको फिर एडवांस फिल्टर विद द हेल्प ऑफ सम मैक्रो और एडवांस फिल्टर के थ्रू, बट वो इतना डायनामिक नहीं होगा, बट हो सकता है मैक्रो के थ्रू हो सकता है, बट वैसे ये नहीं हो पाएगा। और अदरवाइज लाइक मे बी वी नीड टू मेक सम पिवट टेबल, सो इन दैट पिवट टेबल ऑल्सो like we can do like such type of things. So but still, because he wants that okay return, so maybe we can put this column in report filter, and with the help of this pivot table also we can do this thing. सर इसमें करना क्या है एग्जैक्टली, मैं समझ नहीं पाया। इसके अंदर बस उनको वो जो लाइनें हैं, मतलब कुछ लाइनें इसके अंदर जो ना मंथली रिपोर्ट में सेल की है, कुछ लाइनें रिटर्न की है, तो व्हाट ही वांट्स कि रिटर्न की लाइनें अलग आ जाए और सेल्स की लाइनें अलग आ जाए, बस ये करना है उनको। तो उनको बाइफरकेट करना चाहते हैं अलग अलग सीट में, रिटर्न और सेल्स अलग अलग सीट में बाइफरकेट करना चाह रहे हैं वो, कि इसमें से जैसे फिल्टर लगाते हैं हम, और इसमें से फिल्टर लगाया हमने और इसमें से मैंने कर दिया सेल, तो ये जो सेल की लाइनें हैं ये सारी लाइनें उनकी एक अलग सीट में चली जाए। इसी तरह से जो रिटर्न की लाइनें हैं वो एक अलग सिंपल टेबल में कन्वर्ट करके स्लाइसर पर डाल दें। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि लेकिन फिर भी स्लाइसर में क्या है, इतने सारे कॉलम है, 50 कॉलम है, जैसे अलग अलग ये चीजें हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इशू। बट अगर फिल्टर का फॉर्मूला इसमें लगाएं तो बहुत इजी हो सकता है, बहुत ही बढ़िया ढंग से ये काम कर सकता है। जैसे मर्जी उसको आंसर। यस सर। देखो सर, नो डाउट अबाउट इट, ऑफिस 365 का कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ। सो पहले के 30 साल और बाद का 1 साल, जिसमें 1 साल में ऑफिस 365 आया है, वो हावी पड़ता है पहले वाले 30 साल पे, क्योंकि उसमें फिल्टर का फंक्शन है और दूसरे ऐसे फंक्शन है। उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। इतना सिंपल देख के बड़ा अमेजिंग सा लगता है। एक लाइन का फार्मूला लगेगा और सारे उसके ऊपर वो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर वो अप्लाई कर देगा। अब अगर वो ये कहते हैं कि नहीं मेरे को बिना ऑफिस 365 के चाहिए, तो इसमें अगर हम एक कॉलम बनाएं, एक हेल्पर कॉलम बनाएं, हेल्पर कॉलम, यस हेल्पर कॉलम से बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर आप। और उस हेल्पर कॉलम में हमने 2 क्राइटेरिया लेने हैं, एक सेल का लेना है, एक रिटर्न का लेना है। राइट। सो जहां पे सेल आती है वो सेल का नंबर 1 2 3 लिख दे, मतलब ऐड करता हर एक रिकॉर्ड को नंबर दे दे, आईडी दे दे। और ऐसे ही रिटर्न को काउंट इफ्स के थ्रू जो है ना, जैसे इसके अंदर हम कहीं ना कहीं इसके अंदर ये बोल दें दो कॉलम काउंट इफ्स है, यहाँ पे हमने किया नहीं, एक ही कॉलम से मेरे हिसाब से हो जाएगा, एक ही कॉलम से हो जाएगा जी। यहाँ पे मैंने गया और यहाँ पे जाकर के मैंने इसके अंदर रेंज दे दी
और यहाँ पे मैंने बोल दिया इसके अंदर कि अगर ये रिटर्न है जैसे जी तो यहाँ पे मैंने दे दिया रिटर्न, जी या मैं इसके अंदर रिटर्न, क्या मैं इसके अंदर यही डाल दूं ना, ये वाला जो रिटर्न है ये वाला डाल दिया मैंने I2, राइट, जो भी चीज होगी इसके अंदर, और इसको मैंने कर दिया फिक्स, फ्रीज। ये फ्रीज कर दिया ऊपर वाले को, और इसके बाद मैंने एंटर कर दिया। और अब अगर मैं इसको पकड़ के नीचे खींचूंगा तो ये क्या करेगा, मेरे को सीरियल नंबर दे देगा, ये 1 1 2 2 मतलब उसका। और ये, और इसके पहले मैं क्या लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं गया और इसके आगे मैं लगा सकता हूँ यही वाली चीज रिटर्न जो है, इसको यूनिक मैंने बना दिया, रिटर्न देन आर ये रिटर्न 1 कर दिया, और यहाँ से मैंने सेल 2 कर दिया, सेल 3 कर दिया, तो ये मेरी यूनिक की बन गई। अब ये यूनिक की बन गई, और यहाँ पे मैं जाऊंगा, अगर मेरा रिटर्न का है जैसे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिटर्न की, राइट, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक पहले से इसके अंदर नंबर डाल करके रख दें इसके अंदर, ये सीरियल नंबर, और यहाँ पे हम डाल दिया 1 2 3 या जितने भी हैं, और वो भी हम खींच सकते हैं, कुछ डायनामिक बना सकते हैं, काउंटा वगैरह करके या मैक्सिमम वगैरह करके या ऐसे करके। और यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे, या एक्स लुकअप, अगर पुराने में है तो वी लुकअप होगा, एक्स लुकअप तो होगा नहीं, और यहाँ पे इसको हम फिक्स कर देंगे, एंड ये वाला जो चीज है इसको हम सिंगल हाफ फिक्स कर देंगे। ये कोमा करने के बाद मंथली रिपोर्ट में जाएंगे, और ये जितने भी कॉलम है हमारे, जो भी कॉलम है, साथ में अगर मैच भी लगाना चाहेंगे तो और भी डायनामिक हो जाएगा। कोमा, इसके अंदर मैच किया, और इसको जाकर के हमने रिटर्न के ये वाला जो है B2, इसको हमने फिक्स कर दिया 2 से, और सेम चीज हम यहाँ पे गए मंथली रिपोर्ट में, फर्स्ट कॉलम रो को हमने फिक्स किया, कोमा 0 किया, कोमा और 0 कर दिया। बस ये करते के साथ मेरे पास ये सारी की सारी चीजें रिटर्न वाली आ जाएंगी यहाँ पे, और यही फॉर्मूला मेरे को पकड़ करके इस तरफ खींचना है। बस जैसे मैं इस फॉर्मूले को खींचूंगा, जो जो मेरी चीजें ऊपर होंगी वही चीजें इसके अंदर उठा करके वो लेके आ जाएगा। अब अगर इस फॉर्मूले को और नीचे तक खींचना है मेरे को, तो यहाँ पे ये खींच दिया मैंने, ऐसे मेरा ये आ जाएगा। जहां पे एरर आ गई वहां पे मैं एरर को ठीक कर सकता हूँ, मैं ये इसमें डाल सकता हूँ कुछ और कि कैसे उस एरर को ठीक किया जाए। और यहीं अगर B1 में आप इनकम लिख देंगे, सेल लिख देंगे, हाँ रिटर्न इसी दूसरा, इसी तो वो एकदम हाँ से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और इसकी अगर दूसरी सीट जैसे उनको बनानी है, जैसे इस सीट को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसी को हमने एक और सीट को कॉपी कर लिया कंट्रोल दबा करके, और यहाँ पर जाकर के रीनेम किया मैंने और सेल्स कर दिया। बस यहाँ पे जाकर के मैंने सेल कर दिया, ये पूरा का पूरा डेटा मेरा सेल का भी आ गया और ये रिटर्न का भी आ गया। तो ये किसी भी वर्जन में चलेगा, 2007 में, 10 में, 13 में, 16 में, हर जगह पे चलेगा, ये कहीं पर भी रुकेगा नहीं। लेकिन अगर इसको और डायनामिक करना चाह रहे हैं तो एक्सेल 365 में तो सिंगल सेल का फॉर्मूला है, कोई उसके अंदर हमने डॉलर भी नहीं लगाना, इवन रेंज बढ़ती जाएगी, वो अपने आप होती जाएगी। अब इसके अंदर कम, अगर कल को डाटा ज्यादा है, 98 के बाद अगर डाटा है तो उसको ड्रैग करना पड़ेगा, पहले से ड्रैग करके छोड़ना पड़ेगा इसके अंदर, और इफ एरर का फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा हमारे को। तो ये थोड़ा सा मैनुअली है, बिकॉज हमने देख लिया है पहले, तो यही चीज हमारे को बड़ी अमेजिंग लगती थी कि अरे वाह क्या बात है, क्या ये भाई बढ़िया से हो गया। और यही चीज अब जो है एक्सेल 365 का देख करके ये लगता है ये तो यार बड़ा बेकार सा मतलब मैनुअली है। तो ये बस टाइम की बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली सर। पहले जब ऐसे सोल्यूशन देखते थे तो सच में ऐसा लगता था कि यार क्या गजब, मतलब कुछ अलग ही कर दिया। लेकिन सच में ऑफिस 365 ने तो लाइफ ऐसी कर दी कि यार इस पे टाइम मत लगाओ। बिल्कुल ठीक। तो आई होप सर सुमेर जी की जो क्वेरी है वो मेरे हिसाब से 2016 के हिसाब से ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, जो उनको ऑटोमेटिक भी रहेगा और उनका जब भी डाटा आएगा आई थिंक हाँ उनको। ये तो डायनामिक है, सॉल्यूशन तो डायनामिक है, बिल्कुल पूरा 100% डायनामिक है ये। इवन लाइक कल को अगर इसको कॉलम आगे पीछे करना हो, यही वाला कॉलम अगर इसमें डाल दिया तो यही डाटा यहाँ पे आ जाएगा, सेम यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम लेफ्ट में करें, राइट में करें, क्योंकि इसमें फॉर्मूला इस टाइप से लगाया हुआ है कि वो रेफरेंस देख रहा है, इसका कॉलम का रेफरेंस देख रहा है, जो भी कॉलम है उसी को उठा करके लेके आ रहा है वहां से। बिल्कुल और ये हमने यूनिक की बनाई दी यहाँ पे। और ये और भी अच्छा, कल को रिटर्न है, सेल है, इसकी जगह कोई और भी चीज है, 3 है, 5 है, 7 है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एक सिंगल सीट भी बना सकते हो, या आपका एक डैशबोर्ड टाइप से बन गया। इवन आपको
अलग अलग सीट बनाने की जरूरत ना पड़े, एक ही जगह पे आप इसको ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे हम कुछ लगा सकते हैं, वैलिडेशन लगा सकते हैं, वो भी चीज इसके अंदर पॉसिबल है। बिल्कुल सही बात है सर। सो आई होप कि जो ये क्वेरी थी राम सुमेर जी की, उनकी वो आई थिंक सोल्व हो गई होगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट राम सुमेर जी कि वो यूट्यूब पे अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो जरूर उसको रिप्लाई करें कि ये जो सोल्यूशन है ये आपका ऑफिस 2016 में चलेगा और डायनेमिक सोल्यूशन है जो आपके काम करेगा। राइट, चलिए और नेक्स्ट सर देखते हैं। एक यस, प्रखर अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर यूट्यूब पे। वो मतलब कह रहे थे कि हाउ टू ऑटोमेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के थ्रू, वो तो भाई फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट समिप्स का फॉर्मूला है। अगर आपके पास समिप्स का फॉर्मूला आता है, और एक हमारा कोर्स है लाइक इसके अंदर फाइनेंशियल ऑटोमेशन विद टैली, फाइनेंशियल ऑटोमेशन विद ईआरपी डाटा, लाइक फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल ऑटोमेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम ट्रायल बैलेंस विद ईआरपी और विद टैली। तो वहां पे काफी डिटेल में टेम्पलेट भी हमने दिया हुआ है, उस टेम्पलेट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपको कोर्स नहीं खरीदना, तो YouTube चैनल के ऊपर या गूगल पे आप जाएंगे तो कुछ कोर्सेज मैंने स्टडी मेंबर्स के लिए या अलग अलग जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनके लिए मैंने किया हुआ है। तो वहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी इस कोर्स को या इस चीज को आप देख सकते हैं, हाउ टू डू। सर गलती से आप म्यूट हो गए, एडमिट कर रहा था। ओके, हम्म। हाँ तो सर ये आप है, कंटिन्यू कर ये सकते है जी अब इसमें। ठीक है, तो आई थिंक उसमें तो हैं। ये सर उनका प्रीवियस ईयर। रिप्लाई भी आ गया है सर यूट्यूब पे हाँ कि हाँ ही हाँ, सेइंग कि थैंक यू। ओके, सर एक चीज पूछना था। हाँ आपने ये हाँ बताओ। फॉर्मूला लगाया है, और अगर आप पाइवोट करते तो दोनों में साइज कौन सी, फाइल साइज कौन सी छोटी होती? फाइल साइज कौन सी छोटी होती? मेरे को लगता है कि डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पीवेट टेबल में दो पीवेट टेबल लगेगी तो, और इसमें फॉर्मूला अगर बहुत ज्यादा डाटा होगा तो फॉर्मूले के कारण जो है ना फाइल हैवी हो सकती है आपकी बाद में। साइज हो सकता है छोटा हो, लेकिन एफिशिएंसी कई बार ऐसा जरूरी नहीं होता कि लाइक फाइल का साइज बड़ा हो तो वो फाइल इनएफिशिएंट होगी। कई बार हो सकता है बड़ी 100 MB की फाइल भी आप आराम से चला सकते हो, लेकिन केस उसमें पीवेट लगाने लगा सकते हो कई बार। लेकिन 5 MB की फाइल है, 10 MB की फाइल है, लेकिन उसमें फॉर्मूले आपने बहुत ज्यादा लगा दिए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगा दिए, तो वो भी आपकी इनएफिशिएंट हो सकती है। इट डिपेंड्स कि क्या चीज इसमें ये करेंगे। बड़ा डेटा है तो पिवट टेबल मेरे को लगता है कि उसके अंदर इजी रहेगी। अगर मेरे को सारी रोज के ऊपर, सारे कॉलम्स के ऊपर इसमें हजारों फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला इसको स्लो बनाएगा, लेकिन पिवट टेबल ज्यादा स्लो नहीं बनाएगी उसको। ओके सर, नोटेड सर, थैंक यू। सर शिव कुमार बोल रहा हूँ। जी, आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय वीडियो आल्सो। अभी इन दिस solution which you gave for this thing, can't we not use the sort function for already sales and returns? तो उधर लिखा हुआ ही है, हाँ so हाँ, simple sort function will not resolve the matter, I was thinking. नहीं सॉर्ट फंक्शन से तो वहीं पे डाटा रहेगा ना, उनको सेपरेट सीट चाहिए। सॉर्ट फंक्शन से तो हो ही जाएगा। सॉर्ट क्या करना है, वो तो फिल्टर ही लगा ले उसके अंदर। Yeah. सॉर्ट भी क्या करना है उसके अंदर, यहाँ पे जो डाटा है इसके अंदर जाए और इसमें फिल्टर लगा ले, Yeah. तो फिल्टर से तो वो डाटा आ ही जाएगा। बट Yeah. व्हाट ही वांट्स कि यहाँ पे लाइक इट इज डायनामिक, कि अगर सपोज करो मेरा सारा का Okay. सारा रिटर्न है, कि Okay. देखिए सारा मैंने रिटर्न कर दिया, अब Yeah. यहाँ पे जाऊंगा तो रिटर्न में डाटा आ गया, लेकिन सेल्स के अंदर देखिए कोई भी डाटा, ये सारा ये हो गया, ये पूरा डायनामिक है मेरा, इमीडिएटली डायनामिक है यहाँ Okay, पे। you don't have to do it man, this copy Yes, yes. copy So paste. he wants the separate sheet. That's why we are doing this. Okay, I got it. Okay, so I had actually shared one file to Vijay Gupta ji. हाँ हाँ बताइए। Because this now कोई अगर आपकी आपकी क्वेरी है तो मे बी आप अपनी फाइल को शेयर कर सकते हो और आप बता सकते हो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप अपनी फाइल को शेयर करेंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, तो क्योंकि हमारी ये जो चौपाल है इसके अंदर हम लाइव क्वेरीज सोल्व करते हैं। Oh yeah, I can share it right now. बिल्कुल बिल्कुल सर, यू हैव द शेयरिंग राइट, आप शेयर करो, उसे हम लाइव ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सर। You cannot start while other participant is sharing. Okay, so there is some
ओके, एक बार सर को शायद स्टॉप करनी पड़ेगी शायद। नहीं, वो स्टॉप अगर दूसरा करते हैं तो अपने आप हो जाती है, बट कर दी मैंने। सर वो होस्ट है ना, वो होस्ट को अच्छा ओवरलैप नहीं अच्छा कर पाते। अच्छा, ओके ओके। Can you see the screen now? हाँ हाँ, Okay. Actually, the first three sheets are various people working on different projects. Okay, they are remotely working on different projects on a common file, राइट। and the format of the file is same. And I am required to cull out only those points by where they have written to be discussed. In column G, if you see, in all the sheets there will be like pending to be discussed, something like that. Or if it is closed, they will put closed. But if I want to collate all those multiple sheets and only to be discussed to be coming in one sheet हाँ हाँ, as an extract, there are other lines also where the project is completed or something. I don't want to see that line. If I want to discuss only those points where there are remarks like to be discussed, and it has to be instead of going into multiple sheets, it has to come into this expected sheets. there are only 3 seats, or there are even more than 3? There are multiple sheets. So many people. How many seats? How many seats? Multiple means how many seats? Say about 7-8 sheets will be there like that. I've only done only for 3 people now. Okay, 7-8 seats. People adding, and suppose I thought like if they use the same file and append the same file, like the file will become very big. So to again go through each of these, all the issues will get mixed up also. So if it is separately available, the people will work on their different projects separately, and I want to see that pending matters to be discussed on a separate sheet without going into the individual sheets. Is it possible? Anything? Yes, so Yes, it is possible, I think, with the help of Power Power Query, Query. you can Yes. do it. Power Query, like, so through Power Query, we can consolidate it in backend, and through backend only, like if you want only to be discussed. Yeah. So those rows or those data will come here. So whatever your requirement is there. So I believe, and even the seats are maybe 3, or maybe there can be 300 seats. Oh, okay. And I would suggest that if it is better, like instead of having this seat, expected seat to be discussed, so maybe you can make separate file for that, and this file can be separate. Oh, so then we can say that, okay, with Power Query, like let's this consolidate all the seats, and after doing, and even in the same file also we can do. I feel better in this same file. Yeah, so that can also be done, but right now, because they're little, it's not easy, I'll say, and not much complex, but still it will take time. So for creating Power Query, one time work we have to do, and then after that automatically it will take care. Oh, okay. So either maybe we have to see, like some of us is having time, maybe tomorrow or day after tomorrow, so they can work on it, or maybe next week they can come with the solution. Okay. Because right now, if we are going to start, so then definitely it will take time. It's a long process. Okay. So you can share this file as maybe sample file to us, or maybe on groups, or maybe directly to me, or maybe Vijay Gupta, Rakesh ji, and then maybe we can see, like if time permits, so maybe we can make the solution, and next week we can show you. Okay. And another sheet, there is one more sheet, expected sheets. उसमें जो है, actually it is multiple sheets का जो है उसमें pivot table बनाने के लिए. नहीं, वो तो अगर पावर क्वेरी अगर आपकी बन गई, तो पावर क्वेरी में तो जैसे ये है, कल को अगर आपको एक्सपेक्टेड सीट के बेस पे लेना है, किसी दूसरे पे लेना है, तीसरे पे लेना है, तो उसी पावर क्वेरी को हमने कॉपी कर सकते हैं, दूसरी तीसरी, और वो रिपोर्ट आपकी डायनामिक बन सकती है, इमीडिएटली आपकी ये काम कर जाएगी उसको. So Power Query is the solution, I'll say, and maybe you can also explore on YouTube. So maybe you can put some Power Query that, okay, how to consolidate all the seats in a file, or how to consolidate all the
file in a folder. So all those type of solutions are available on internet. So maybe you can also explore, and we'll also see that if time permits. So maybe we would try to make some solution. Yeah. क्यों जी राकेश जी, आप क्या कहते हो सर? ये ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सर तो 1 घंटे में मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करते हैं, तो अगर कहीं कोई लेंथी क्वेरी आती है तो हम उसको बाद में सॉल्व करके और डायरेक्ट सॉल्यूशन नेक्स्ट उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। बट प्राइमा फेसी इट्स डूएबल। ओके सर इसमें 5-10 मिनट लगेंगे इसको। तो बस तो फिर आप करिए जी, 5-10 मिनट लगेंगे तो आप कर दीजिए। आप जो है ना ये इसमें जो है ना बहुत बढ़िया है भाई, आप तो पावर क्वेरी के एक्सपर्ट हो गए हो मिलिंद जी, तो ये तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है। यस मिस्टर शिवा कुमार, फर्स्ट यू कन्वर्ट योर शीट्स इनटू टेबल। Okay, that is you are talking about multiple sheets into one pivot table, no? That's what you're saying. No, just table. This is not in a table format. Just press Control T. Control T, okay. And you say, yes, I have headers. No, you have, okay, yeah, just say okay. Yeah, go to the next one. Again Control T, yeah? Yeah, again same Control T. Yeah, go to the next one. The Control T. Yeah. Now this is expected sheet, right? This is the result. Result ये फॉर्मेट में आना चाहिए, उसमें to be discussed जो है ना वही इधर आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ लाइंस नहीं चाहिए। ठीक है। So what you do is this one. Okay, you can now press data. In any sheet, हाँ? और कौन सा sheet में जाने का है मुझे? Get no. It's okay. You go to get data. Get data. On the left. Yeah. Go to from other sources. Yeah. Blank query. Last one. Oh. Now in the formula bar you write is equal to. No. In the formula bar write is equal to. No. Just is equal to. Okay. Yes. Write this power query is case sensitive, so you need to write E Excel. So E should be capital. Oh. Excel. Yeah, that the first one you choose, current workbook. Oh. And open the bracket, close the bracket, and press enter. So now it has given you these tables. Okay. There are 3 tables you have. Yeah. So you click go to that content. No content. No. Oh, sorry. No, you wait. No, don't do anything. Wait. Okay. On the right hand side, you will see some steps like applied steps. Yeah, you cancel. No, come down. Can you see change type? Just delete that. Yeah. You delete. Come on the left. Yes. Delete. Yes. Delete sign. Delete Yes, sign. there is a cross sign on the left side. Just click on it. Yes. Again you delete. Delete. Yes, that's all. Now you on content, you can see 2 arrows. One is going right, one is going left. Yes. Left click. It will tell you to expand. Yeah. Okay. So you say use original, uncheck use original, the last one. Yes, and say okay. So now you have go to the right. Now you can see your go to the right. You can see your pending width. Yeah.
You see? To be discussed in the column. You just put Yeah, a filter so you here. can then choose whichever. You can get it in pivot table. Oh, yeah. Now, you know, this is the table. This is the Yeah. table. You have combined all three. Yeah, correct. Okay, do one thing, because you know there is a challenge. That's why I'm saying. Yeah. Now go to close and load. Go to close and load on the left side, upper left side, below file. Yeah. Click that. And then you say close and load. Okay. Now it has come at one place. Oh. This is what you wanted. You can filter it. Yeah, this I can filter it just like that. Yeah. Now, you know, the challenge in Power Query is just wherever written, it is written 7 rows. Just there is a refresh button. You know, query 1, there is a refresh button on the right hand side. Queries and connection. Queries and below, there is a refresh button. Yeah, on the right. Yes, just refresh it. So it is going to make double, right? Oh, okay. So to remove that, what you do is you right click and say edit. Right click in query. Right click there and go to edit. Yeah. Go to the source where the written there are steps and applied steps. Go to source. Yeah. Yes. Click that and refresh here. Just refresh here. Where On the after just below home there is a refresh button. okay. Refresh all. Yeah. Yes. See, you got query here. You know, content and name table query 1. Yeah. In the table. So you don't want this query 1. So what you do is, sorry, in name drop down list, yeah, and you say text filter. No. Okay. You say text filter. Yeah. Does not begin with or does not contain. Yeah, begin with query 1. Okay, Insert. No. Have you written? But you have not I written have not anything. written anything. I have not written anything. Yeah. So write first. पहला लिखूं क्या? Does not begin with. कुछ Yeah. आया? कुछ आया नहीं. Okay. Yes, sir. Yeah. You say insert a step. Yes. You say You want yes. to insert the step. Okay. You say yes. Okay. Say insert. Now, exactly as I said, this is case sensitive. You have to write the exact query. Query. No. You have to write query 1. Okay. Oh, okay. Yes. So now again, you go and close load 2. Go to left, close and load 2. Yeah, you can say close and load. Yes, refresh here. So it will come. Now you go to your any of the files. Go to QPO file. No. Go to QPO file. Yeah, you can put the third one. Say 1, 2, 3. You put the third one. Yeah. No, you can directly copy. Yeah. Yeah, that's what Copy and you say 3. Yeah, I will write here to be discussed. Yeah, to be discussed. Okay. That's it. Now go and refresh. Inquiry. Yeah, refresh here. You have to put, since you have written serial number, change in QP or your serial number also, number 3. So you'll get to know whether it has appeared or not. Yes. But I don't think that this has come here by table. Can you check? In QPO, is your data is in table? Go to the right. Is it in table? I don't think. Okay. Expand. It is in table, but it is to be Go expanded. to the right. Right. It is not No, in it is table. not in the Just drag that. Yeah, drag that. No. Hello. Yeah. You know, can you see on P3? Yeah, just drag that. Yes. No. Yeah, drag down. Insert table.
Yes. Okay. So it will not work. No, no. I'll tell you. Pura. Control Z. You do the Control Z Yeah. and go to the table design. Go to the table design on the top side. The tab. Last tab. Last. And here you say resize table. First one. Resize table. Down. Yes. Here you change the range Acha, okay, 4. to 4 and press OK. Now Yes. you go to your query one and refresh. Yes. Oh yeah, it is appearing. Your data is ready. Oh yeah, Okay. great. I think this is what you wanted, right? Yes, very much. Okay. Excellent. Welcome. I'll say like मिलिंद जी, तो आप तो लाइक जैसे उसको प्रेम जी को हम बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछने के एक्सपर्ट हैं, आप जो है ना पावर क्वेरी के एक्सपर्ट हो गए हमारे आज से. यस सर, मैं काफी कुछ देखता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ सर. हाँ, नहीं बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया. आपने जो है रियल टाइम पे मेरे को भी मतलब जो है ना, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग सो मच ऑन दिस पावर क्वेरी, सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट सो कॉन्फिडेंट कि मैं रियल टाइम पे मैं इसको भाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. बट रियली हैट्स ऑफ टू यू कि आपने जो है इसको बढ़िया से पावर क्वेरी आपने रियल टाइम पे करवाई और बहुत बढ़िया लगा. काफी बढ़िया लर्निंग जो है इसके अंदर आई. जो ब्लैंक क्वेरी है कि ब्लैंक क्वेरी के थ्रू हम आपने वो एक डायरेक्ट वो किया, एक्सेल टाइप करवा करके कि डायरेक्ट हमने उसके अंदर फॉर्मूला डाल दिया, वहां पे हमारे पास टेबल्स आ गई सारी. और ये जो स्टेप आपने किया कि पावर क्वेरी को हमने जो वो आया, जो सीट का टेबल का नाम आया जो क्वेरी, वो हमने कैसे रिमूव कर सकते हैं. राइट सर. really इसमें good. सर एक दूसरी भी बात बताता हूँ सर. इसमें टेक एन एग्जांपल सर कि अगर हमारे पास कोई टेबल के नाम आते हैं, समझो जैसे आपने बताया था कि हमें फोल्डर से लेनी है फाइल्स. हाँ. तो कभी कभी क्या होता है, इफ वी प्लान अकॉर्डिंगली, सपोज मेरे पास 5 फाइल है, मैं 4 फाइल पे काम कर चुका हूँ, 5वीं फाइल मेरी काम नहीं किया है मैंने, तो मैं उसको फिल्टर में जाके बोल सकता हूँ कि ये 5वीं जो फाइल है, I mean to say, I will choose only data for those 3 files, though it appears for the 4 files. I will say that, okay, you give me only wherever it is maybe underscore something or maybe contains something. And when I complete my 4th file, I rename my 4th file. The moment I rename my 4th file, it will be part of my Power Query. Exactly. So those are the creativity, I'll say. So those type of things actually we can do. So in filter, like in Power Query, we can write that, okay, this is not begin with, or this is contains this is not equal to. So all those things actually we can do. Like the first step you told that, okay, after this Excel like tables, so it's showing 3 tables. So there itself we can put some filter that, okay, out of these, like we don't need this particular table starting with that or starting with and not starting with that. So all those things actually by doing practice we can do. So definitely like the person like who are new. So in case you are also interested to know how this Power Query works, how this this new powerful thing. So we also have one this course on our Champ Excel website with the name of Power Query. So just 2 days course, 5 hours course is there. And you can learn like these things which today actually we discussed, and a lot of other things also, like basic things if you are going to cover. Because I know, Milinji, you did our course. That's after that only you started this exploring Power Query. Am I right? Yes, sir. I got interested. Let me tell you, sir. I got interested by ICAI. There was one because I'm from Tanzania. So when I saw one of your lectures or by arranged by ICAI, from there I started following you, sir, and I'm still following you, sir. Thank you. I'm still learning from you. So अब सर तंजानिया कब बुला रहे हो आप हमारे को? तंजानिया जो है ना, अभी तो सर एयर टांजानिया भी शुरू हो गई है, because you know there is a direct flight. I'm from Bombay. There is a direct flight from Bombay to Tanzania. So कभी भी आ सकते. There is a bubble agreement, so it is going to end by I think 30th of November.
सो Okay. उससे पहले ट्रैवल कर सकते हैं सर, नहीं तो फिर से बंद हो जाएगी. यू कैन कम थ्रू अदर एयरलाइंस ऑल्सो, बट हियर इट इज जस्ट 6.5 hours ट्रैवल टाइम, वेरी लेस. नो अरे सर नो ट्रांजिट. आएंगे तो तब ना, जब सर वहां का कोई खर्चा पानी कुछ निकलेगा, कुछ आप कोई काम वाम कुछ दोगे तभी तो आएंगे. ऐसे थोड़ी आकर के हम क्या करेंगे बताओ. 6.5 जरूर घंटे की सर, जरूर. आने जाने की फ्लाइट, भाई टाइम भी लगेगा, पैसे भी लगेंगे. फिर उसके बाद चलो राइट. आपसे मिलना हो जाएगा, ये तो बात ठीक है. बट कोई ना कहीं कोई फ्रूटफुल हो, कोई वहां पे कोई आपने सेशन कराया, कोई वहां पे कोई इवेंट कराई, या कुछ और हमने कोई ऑटोमेशन का काम किया, तब तो थोड़ा लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं सेल्स श्योर बनती सर, है. sure sir, I'll update you sir. And I love to take power query, just small, like, people, I mean, I know recently I have, see, wherever there is a same format, it is much easier to combine that all the files together. Last month itself, I combined 600 files and I got the result. So I have to just work on one file, and all 600 files got combined together and I got the result. Yes, so that, like, if from folder actually we can do. So wonders actually, not only these 600 files. So there are so many things actually we can do for our clients, for our. So, but just actually we should know the basics and the conceptually, if you are strong, so anything we can do. So Hello. just Yes, we should yes. aware Can I that comment, yes, sir? that is Right, sir. there. Milinji, this Hello? was a beautiful. Yes, and CP Mathurji is there. Yes, sir. So he has written on chat box that he has subscribed today one of our product automation of ERP, this final statement, which I was talking just 10 minutes back. So he's saying he's having one query. So I got the query from him. Sir, So sir, I'm can I having the comment, sir? file which like he has shared with me. So maybe he has also joined us on this Zoom, so he can tell something in detail, and then maybe we can try to give the answer. Oh, sir. Right, Yeah, Mathurji? yeah, Vijay sir, I have joined the call, and thank you so much, Vijay sir, for your. I have subscribed your 1 or 2 product, and I really thankful that I got the chance to meet with you. I learned a lot from your 2 sub products, and I'm going to subscribe one of your product like query, Power Query, in next 2 or 3 days. So, sir, when I shared one file with you today, can you open that file, sir, so that I can Yes, yes. elaborate in This detail? is your file, sir. Right? Yeah, sir. Yes, sir. So just go in the sheet 1, sir. Here in the sheet 1. Yes. So here in sheet 1, sir, what is my problem here? Because we are doing converting, means in the I column I have applied the formula. Just go in the I column. Yes. This is the formula which I learned from your your file like automation of ERP. So my purpose here is that, sir, I want to take the average rate. Like for example, I have select the period from April to June, and now I want to take the average rate. If we'll go in the sheet 2, just go in the sheet 2. Now in sheet 2, because they are as per index 21, our P&L item has to be converted by the average rate. Okay, so if I have to convert my financials in the reporting currency, then I have to take the average rate from April to June. Okay. Right. Okay, so how I can automate that? For example, how I can take that average rate and can apply in this form in the sheet 2. So this is the Yes, so I got your query, and on your mail also you have written. So there also I understood your exact requirement. So what is Yes, your sir. exact requirement? So you want that, okay, initially, like you have given that, okay, for which period you want to see the report. Like Yes, you sir. say that, okay, you want to Yeah. see the report from April 19 to June 19. Maybe Correct. sometimes, like maybe you want to see April to March. Sometimes Yes, you want to see only for May to May, right? So Correct. whatever period you have selected, so you want that, okay, for that selection of the period, so you want that your rate should be Average automated, rate. Yes. right? Yes, So sir. Yes, sir. what we can do, like right now you are having this currency rate only for 3 months, right? Yes. So Yes. maybe in future, like you are going to have the these rates maybe for 12 months. Am I right? Yes, sir. Right. So here what we can do, like we can make one helper column here, and that Okay. helper column is the like selected period. Okay. Okay. And here we can put average of selected period, right? Okay. Okay.
So what we can do, your requirement is there. So whatever period you are going to select here, so we can put here one formula of average ifs. If you have know this formula or not, I'm not sure. Average ifs formula is there. Okay. Right. So with this average ifs formula, what you can do, you are saying that, okay, we want to do the average of this data. Right now, these are 3 months. There may be 30 months, there may be 300 months or with 12 months. Correct. So now you are saying that, okay, this you want to like average. And what is the criteria? I am saying that this is my criteria. I can fix this. And then I'm saying that my criteria is greater than equal to. And I'm saying, and this is I'm saying April. April is, that is F4. So this I'm making fix. So this is one criteria I have written. And the same criteria, I can give one more criteria here, Control C and Control V. And here only change I have to do, instead of greater than, I can put less than, and A4 ki jagah, what we can do, B4. And then if I'm going to put here, it is giving me the average rate. So that average rate is, my average rate is based on these 3 months. So now I'm dragging it. So this is giving me average rate. So let's say we are saying that, okay, we need April 19 only. So this is giving me 80 rupees only for April. Okay. But in case I want May 19, so it is giving me 80 and 90, average rate is 85. Now, this column you can connect with your data. Earlier you were taking the data from here. Now you can take the data from here. So this is your selection period, and this is giving you average. Okay, okay, understood, sir. I got your answer. I got your answer, sir. I will try and I will update if I got any issues, sir. I will reconnect in the next session, sir. Yeah, sure. Anytime. Most welcome, sir. Okay, sir. So I learned this formula actually from your product, sir. This formula which I automated, I have learned from you all the formulas. And thank you so much, sir, once again, sir. Thank you for showing confidence in our products. And I also look forward that you also do our lot of other sessions. Actually, we are having this Excel 365 session, filter formula, XLOOKUP. There are a lot of new sessions actually we are having on our website. So if some of you are interested, so definitely you should explore all those courses, and it is going to be like immense helpful. That I'm sure. Sir, I want to get one information. Like in the formula tab, if you go in the formula tab, so just go once in the formula tab. In the formula tab, in the Excel bar, in the formula tab. So I want to know whether you have covered the formulas of financials formula in your product, any of the product. No, financial formulas actually right now I don't have any master class on financial formulas. Yes, that's also like in pipeline. So maybe we are going to come with some in financials. Like there are so many formulas, but at least 8 to 10 formulas which are very, very useful. So definitely I would like to have the class for financial formula. So give me some time and I'm working on it. So maybe within a month or so I'll come with the financial formulas. Is there any product in which you have covered these formulas? I mean, any of your product which I can No. But if you have like specific requirement, then definitely you can send me sample data. अगर आप sample data देंगे तो मैं उसका आपको solution में आपको वैसे ही दे दूंगा आपको अगर कोई आपकी कोई requirement है. Okay, sir. Thank you so much, Vijay sir, for considering my query, sir. चलिए, ठीक है जी, thank you. हाँ जी, राकेश जी. जी सर. ठीक चल रहा है. बहुत बढ़िया चल रहा है सर, मजा आ रहा है. वंडरफुल. वैसे तो मिलिंद जी ने बहुत बढ़िया, मेरे को सबसे बेस्ट जो उन्होंने पावर क्वेरी का आज जो बताया वो तो आज वेरी गुड. मतलब काफी इमीडिएटली उन्होंने सॉल्यूशन दिया, कैसे उसको इकट्ठा कर दिया, फिर वो जो क्वेरी बन करके वो डबल उसको रिफ्रेश किया, उसको हटाया. दैट वाज न्यू लर्निंग. So it was very good. Two things which we must appreciate about Milan ji. First, he dared to take this challenge that let me handle it. I will do it in 5 minutes. Exactly. And without any second thought of mind, he went crystal clear, straight line way, without ifs and buts, and reached to the solution.
So Yeah. these two things we must acknowledge. It is really appreciable, sir. Exactly. So it comes with like practice. So if we are doing lot of practice, we have done like such type of work many times, then only like we can have such type of confidence. Otherwise, if we just heard something or we have seen something, then if we are going to do, it is not going to work. So practically, if we have done, then only like we can do it. So ये Sir, really बिल्कुल ठीक बात है. you are absolutely right. I have made lot of mistakes, and then I have learned it. Because why you make mistake? So after your mistake, you know what is your mistake. So I have learned a lot by mistakes, by making mistakes. Right, right, right. सही है जी. चलिए नेक्स्ट क्वेरी अगर किसी की कोई है, कोई someone Vijay else. ji, one clarification I would like to seek. It is related to VLOOKUP or XLOOKUP. When we apply VLOOKUP and there is a condition also, say the data is given in respect of 2 elements or 3 elements, and we want to apply on one element, under one column on one element. So one thing which you recently did is sales or return. You pick the thing sales and then 1, 2, 3. I mean that way you applied. Okay. So it could be applied on a conditional manner by joining two things. But if it is VLOOKUP is to be applied through approximate thing, with -1 or 1. If it is XLOOKUP, then it will be -1 or 1. And if it is VLOOKUP, it will be 1. So if it is to be applied with approximate match, so how can we handle this scenario when 2 or 3 or 4 such things are there? No, but if you can show me some sample data, so maybe we can try. I'm not sure like exactly what you are looking for. तो मे बी अगर कुछ सैंपल डाटा है, अगर किसी की क्वेरी नहीं है तो मे बी अभी हमारे पास टाइम है 15-20 मिनट, तो आराम से हम और दे सकते हैं. कोई इशू नहीं है जी, आप शेयर कीजिए. चलिए मैं शेयर करता हूं सर जी. अगर पहले एक बार पूछ लीजिए, अगर किसी की क्वेरी है तो जी एक बार पूछ लें. इट विल नॉट बी फेयर ऑन माय पार्ट टू टेक टाइम. अगर किसी के पास नहीं सर, टाइम ऐसा कुछ नहीं है. फेयर वाली बात तो सर ऐसा मत बोलिए आप. सर कुछ भी आप जो पूछोगे, कुछ भी आप बताओगे, तो सबके लिए कुछ ना कुछ नई जो है लर्निंग है. तो ऐसा कुछ नहीं. बट यस, हम एक्चुअली वी वांट टू गिव द मोर लाइक फोकस ऑन द न्यू पार्टिसिपेंट्स, या जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना संडे वीकेंड हमारे साथ बिता रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको मिलना चाहिए जो जिस पर्पज के लिए वो आ रहे हैं. वैश्य रवन जी हमारे से जुड़े हुए हैं. सुरन जी उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है. हाँ, बताइए. वैजी, यू कैन यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्पीक. Hello. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. How are you, sir? Good. Good. Thank you. Sir, I need one small help. See, Yes, I need please. to upload some that is entries into Tally. Okay. I have one uploader file in Excel. Okay. Okay. There is one sales register will be available, sample. Right. Shall I now share it? How to convert it into that journal types? Debit, credit. So, like you want in Excel something convert, or Excel you want Excel that? only. Excel to Excel only. Okay. So just you show your file. So maybe Yes. let me see. So Yes. maybe you Shall can I share the screen? Yes. I think you have right to share the screen. Yeah, 1 second, sir. So this is, this is my final output. Okay. So this is my input. Okay. So I need to do this entry, conversion entry loader. It's a sample file. No, what exactly you need? You tell me the exact cell or column where you want to put some formula and you want to automate the thing. Just to tell me. This is my basic entry, sales entry. Okay. This is the tax. This is some income tax TCS, GST TCS, and this is it is my amount.
total amount for the party. So Right. what I will do, credit this amount, all these three things, debit to the party. Okay. So this is the date of invoice. This is a voucher type. This is account name, means there is an account name will be there. This is the date. This is again that number of invoice number. Narration is the sales, and this is a state code. That is called center. I got your point. So my now question to you, whether each voucher is going to have only 4 rows, exact 4 rows, or these rows can not necessary. Not necessary. There may be one more column also will be added in the case of CGST, SGST, like that. No, that's okay. Like I'm saying that whether your rows are going to be fixed, either it is 4, either it is 5 or 6. Yes, or 5 8. or 6. Maximum 5. No, it is not maximum. I am asking, is it always 6, or it can be very like Very, 4, sir. 5? Very, sir. Yes. Very, sir. Very. It is going to vary. Yeah, Okay. very. See, because in this tax column, so you will have, in other words, you will have like this. This is CGST. This is GST. This is IGST. So like that. So this will be this is the maximum that the column we will have. A simple sales register. Right. So What I used to do, I need to have one pivot table, but it is a lengthy process for me. yeah. So for this, which version of Excel you are having? I'm only up to date, sir. 365 latest. 365. Okay. Yes. So After again, your like training only, I was that forced to purchase this 365. Yeah. So everyone is going to force to purchase, like in future after 1 year. Like I Because think of your training only. there will be less than 10% people all over the world. So who Yes. are going to have this version other than the Excel 365, because by hook or crook. So Microsoft wants that everyone should move to the Excel 365. Yes. So here, like my maybe first I would say that okay, maybe Vijay Gupta ji, Rakesh Arora ji, Prem ji, or someone else, if they want to tell that what is the solution. So later on, maybe I can also add like what I would like to say. सर ये पावर क्वेरी से हो सकता है. Oh, great. बिल्कुल पावर क्वेरी ही मेरे माइंड में था. ये पावर क्वेरी मेरा सॉल्यूशन था जो मिलिंद जी ने बताया. पावर क्वेरी से बड़ा इजीली हो सकता है, बहुत बढ़िया से, बहुत फास्ट, विद इन 1 मिनट, हाफ ए मिनट, कितना भी बड़ा डेटा हो आपका ये पावर क्वेरी के थ्रू हो सकता है. What you do, you just select from A2 until don't select the total 300, that is the row number 6. Don't select that. Okay. Yeah, Mr. Srinivasan said unpivot. That's the right thing. Okay, now Control T. Okay. Say okay. Now you go to data. Go to from the get table, from table range. From table range. Yes. From table range. Yes. Yeah. What is running? Yes. It sometimes, like first time it takes time, but second time if you are going to do it, won't take time. Maybe the laptop you are having, it should be the maybe very less configuration. Maybe it is i3 or even lower than that.
That's why it has taken so much time. Okay. You can right click on date and change the date. DT, where it is written DT, yeah. right click, go up on the header. Go to the header. Okay. Yeah, right click there. Yeah, you go to change type. Can you see change type? Change time. Yeah. Yes. Yes, select the date, only date. Right. And say yes, replace current replacement. See, understand, in Power Query, they say that, all your whichever columns you have, you should check whether the text, the type is correct. For example, you are looking at first column, which is invoice number. It Correct. says 1, 2, 3. 1, Yes. 2, 3 means it is a number format. Column. DT is date. You have appropriately given the date format. Okay. Party name, it is not name, so it Yeah, is it's a- again a number, so it's Yeah. okay. It's When you okay. are saying sales, again it is okay. So likewise, if you have SGST, there's everything is nil, doesn't matter. Go to still right. Okay. So you just check if this is not, this is going to be number, then you Okay. can, yeah, change it to number. You can select all of them together. Like, yeah, that one you, and the other one, that is SGT and IGST, you select both the columns The top. at a time. Control and select. No, the header you have to choose. Yeah, and no, not, I didn't say drop down. Right Okay. click there. Okay. Yes, and then you say this will be number, right? This will number change type. Yeah, so change it to number. You have to check, is it whole number or decimal number? So Decimal number should be. Decimal number we should put na. yes, so put decimal. So likewise, your other sales also should be decimal number on your left. No, you are why? Yes. Put a decimal number. Maybe like this can be done. So this is not something like right now we should Yeah, go with okay, that. sir. So just we should tell that, okay, how to do the unpivoting. Pivot, right. Yes. Now come to the left. Now you just select first three columns, that is invoice number, highlight, yes, hold Control T, yes. Yes, he has done, and right click, Right click, and you say unpivot other columns. Second last. Yes, say third last. Third last, unpivot last. columns. No, third. third. No. Unpivot other columns. Unpivot, yes. That's all. So it has done. Now, Great. now you have to give the conditions. See, Okay. you wanted debit and credit, am I right? Correct. Yes. Okay. Now what you do is you go to add a column on the tab, add column. Okay. Up. No, add column. It's Add file, home, add column. Yes. Why it is not highlighted? No, you've done something. No. Just escape. Yeah. Now you go to add column. You say conditional column. Yes. Okay. Now you write the name here. Say you say credit. Credit. Yeah, and delete this custom. So you say column name. Select if column name. Yeah, drop down. Now what you wanted, the attribute. Select the attribute. Okay. Yes. Now you go to the the value where it is written. Okay. Sorry. Attribute equals to. So you write here total. No. You check the drop down list under value. No, not that one. Under value. No. Yes. So select a column. Okay. No, sorry. Just click again. Select a column. Yeah, and just in drop down there.
What do you want? That total column, for example, You this want total, right? column, this Yeah. total column, 100 column should be go See, to yeah, debit. what will come if you see total here, that is attribute is total, Yes. then it should be the amount, the column will be credit, otherwise it will be a debit. It will come like that. Should be debit. This Excel entry na, will be to debit, total right? should be total should be Yeah. debited. Yes. Correct. So you go to again add column, conditional column. वैसे तो मैं मतलब ये सजेस्ट करूंगा कि इसको वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं कस्टम कॉलम, बट वंस एक बार पावर क्वेरी अगर हमारी अलग अलग होकर के डेटा चला गया वहां पे, तो इट्स वेरी इजी कि हम वहां पे जो एक कॉलम में उसके बगल में एक कॉलम डाल दें और वहां पे हम फॉर्मूला लगा दें, सिंपल इफ का फॉर्मूला, कि अगर मेरा ये है तो ये डेबिट में आ जाए, ये है तो क्रेडिट में आ जाए, या इसके अंदर डेटा जा करके जब वहां पे हम उसको अंदर डालेंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली हम डाल सकते हैं ये चीज. तो ये मतलब इसमें सिर्फ टोटल अगर लिखेंगे कि टोटल इज माय डेबिट एंड अदर्स एवरीथिंग व्हाटएवर कम्स इज माय क्रेडिट. yes that we can write. So yes please go ahead. So ये तो क्वेरी में हो जाएगा, तो नथिंग लाइक दैट, वो तो बढ़िया से बढ़िया है. क्वेरी के अंदर अगर हम उसमें एज ए क्वेरी के अंदर ही अगर फॉर्मूला इनबिल्ड हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. तो ये आपका बिल्कुल हो सकता है. आप जो ये भी कर सकते हैं कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स के थ्रू भी हम कॉलम बनाएंगे तो वो भी कई बार बढ़िया से काम करता है, इजी होता है. राइट. जस्ट क्लिक कंडीशनल कॉलम. Okay. So you give new column name is debit or credit, right? Debit or credit. Debit or credit. Debit or credit. So column name is attribute equals to. So here equals to, enter the value. Not enter the value. Total. Yeah, that's what I tried before. Yeah. It is case sensitive, so you have to be very careful. It should be the same. Output should be credit, right there. Credit. Sorry, debit. Debit. No. Yeah. Output should be credit, you know. No, it is sales. It is a total is party's account, right? Yes. Total is party's account. Yeah, so you have to write debit. In output, after that, you write debit. Debit. And yes. and else credit. Okay. Now you can take it to pivot table. I mean table, and then it will give you the. You can doing a pivot table. You can have debit credits. Okay. All right. So now I need to save this, and how to extract the. Yeah. Go So to what home. you do now? Go to home. Okay. You say close and load. Close and load. Okay. Click it. Close and load. So this is your output. Now you create a pivot table out of it. Yes. Go to pivot table, insert, pivot table. You say existing sheet, so people can, I mean, you can see. Yeah, click in H2. Click H2. Yes, okay. Now you know what to do. Yeah, just put the invoice number and other things. No, why invoice number has come in value? It should be in row. Row. And data should be row. Should be row. And debit or credit you put under column. Debit or credit you put under column. Debit or credit under column. Yeah, and you can remove the grand total. Click on grand total and delete that. No, not that one. On the columns. No, K. It is K3. Go to K3. Right click. Remove grand total. Remove. Yeah, and if you want to change, you can write here, or wherever it is written credit, you write debit there. Attribute. Okay, wherever it's
No, you put this. You just click on the table, pivot table. Okay. Go to design. Design. Up on the last tab. last tab in the It's up. No, it's Design, file, home, last one, design. It's covered. Okay, right. There's a covering is there. Okay. In the design. Close this first. You need to close this. Design. Yes. You will see report layout. Third one. Choose tabular. Third Show one. in tabular form. Yes. Yeah. And then you say again, subtotal. Again same. No. Again you go to there, report layout, and say fourth one. Repeat all items. Yes. Click on. And if you don't want subtotals, you can go to subtotals, the first one. First one. And say do not show subtotal. Wow. Yeah. Okay. Fantastic, sir. And wherever credit is written, go to L3. L3. Okay. L3. L. Yeah. 3. Okay. Is it 3? It is 4. It is 3. Yeah. L3. Yes. Cell. You type there debit. Okay. Type. No. 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 Don't do that, my friend. Undo. Control Okay. Z. Okay. Control Z. Yes. You type debit, don't give space, and enter. Okay. Debit. Space. Okay. Space and backspace. 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 Correct. I did it correct. No. Then do one thing. You have given some space after debit. Don't give space after debit. नहीं, इसके लिए मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ. इसकी जगह आप ऐसे मत करो, इसको कंट्रोल Z कर दीजिए. कंट्रोल Z. बस. ये है आपका. नहीं, अब कंट्रोल Y कर दीजिए. कंट्रोल Y. यस. तो यहाँ पे आप जाइए, क्राइट पे राइट क्लिक कीजिए और मूव कर दीजिए इसको. ये है ना नीचे मूव टू राइट साइड. मूव टू ये डाउन है, एंड है, ये राइट साइड होगा ना. एंड मूव टू एंड. हाँ, मूव क्राइट टू एंड. बस हो गया ये काम. कितना सारा. This is what you wanted. Excellent, sir. This is what I wanted. Excellent. Okay, wonderful. What you can do, go to sales register, copy some entry. अगर कुछ आपकी नई एंट्री आएंगी सर, तो वो एंट्री अब आपकी रियल टाइम पे सेव उसमें हो जाएंगी. नई एंट्री आएंगी, ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएंगी सर. अब आपको जब भी करना होगा, इमीडिएटली अपडेट्स हो जाएंगी एंट्रीज. अगर आपकी एंट्री चेंज कर दिया आपने या कुछ और कर दिया, एवरीथिंग विल बी डायनामिक नाउ. अब इसमें आप SGST में भी डाल दीजिए, IGST में डाल दीजिए, जो भी डालना हो आप डाल दीजिए. इसमें कोई इशू नहीं है इसमें. 56. और अब वहां पे जाके रिफ्रेश कर दीजिए. बस रिफ्रेश कर. Sir, one second, sir. No. You have not changed the table range. Yeah. Table range. Okay. Table range. Go to the table and जैसे विजय सर ने पहले बताया था. हाँ, exactly. बट ये टेबल रेंज तो बाय डिफॉल्ट वैसे बढ़ जाती है, इसमें क्यों नहीं बढ़ रही मेरे को? Actually sir नीचे डाटा था. No, not done. Still you have not done. It's not done. Yes. Go to the table. Go to the table design. Table design. Go to the table design. On in the topmost tab. On the top. No. You click in the table. Click. Keep cursor in the table. You will see a table design on the ribbon. Okay, right. Same mistake. Yeah, that tab. Now you say resize. On the left hand side. First one. Yes. You Change it to 5. 5. Oh. Okay. Select. Now select. Or select again. वैसे by default it should automatically be updated. Now you just go to refresh your table query one, and that's it. First you have to not that one. First you have to this table you have to refresh.
or the green one. Come Okay. to green table, right click Like this, and that's- say refresh. Yes. And now you refresh pivot table. Refresh. wow, it's done. Yes, it's done. तो सर अब आप जो है ना मिलिंद जी को एक चेक भिजवा देना सर, आप जो है 100%, ये जो है ना इतना इन्होंने देखिए मेहनत की, आपको रियल टाइम पे आपको सॉल्यूशन दिया है, It's a complete sir business solution. बिजनेस सॉल्यूशन आपको दे दिया सर। एक इसका जो है ना भाई जो भी आपकी श्रद्धा हो तो वो आप मिलिंद जी को चेक भिजवा देना, फिर मिलिंद जी हम सबको पार्टी करेंगे उस चेक से। Great, sir. ये फिर तंजानिया बुलाएंगे ना, मेरे को तंजानिया बुलाएंगे मिलिंद जी उस check जरूर से। सर। Naturally, naturally. Chocolates may, I will send you the chocolates. एक बार यस एक बार है ना मुझे वो कंबाइन कैसे करते हैं फोल्डर, वो भी दिखाना है, बहुत बढ़िया है। Okay. फोल्डर से कैसे कंबाइन करते हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए भी कुछ रखो मिलिंद जी, थोड़ा Yes. बहुत जो है ना अगली बार के लिए हम रखते हैं। अभी हमारा टाइम जो है ना काफी हो गया है, बट Thank you so much. रियली इट वाज ए फैंटास्टिक, लाइक आई से जो वीकेंड हम कह सकते हैं कि जो सेशन है हमारा बहुत ही बढ़िया, नई नई चीजें हमने यहाँ पे आज की, और आपने जो 2 पावर क्वेरी के जो सॉल्यूशंस आपने लिए हैं तो बहुत ही बढ़िया थे सॉल्यूशंस, फैंटास्टिक, तो रियली इट्स ग्रेट। Fantastic. थैंक और यू सर। राकेश जी का टाइम आप वो सोच रहे थे, बट कोई बात नहीं, राकेश जी ने भी कई चीजें इसमें सीखी होंगी, कुछ ना कुछ नया जो है, तो राकेश जी नेक्स्ट टाइम जो है फिर आपकी वो ले लेंगे। आप अपनी क्वेरी वैसे मेरे को भेज देना, मे बी 1-to-1 विल डिस्कस, और फिर उसको हम देख लेते हैं सर। जी वंडरफुल सेशन टुडे जी। हाँ Excellent. तो ठीक है जी, तो लेट्स क्लोज, 9:15 ऑलरेडी हो गए हैं, और बाकी आप लोग क्वेरी वगैरह पहले से भेज दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहता है, मे बी वी कैन कम विद रेडी। बट आज जो भी ये सॉल्यूशन, और खाली मिलिंद जी ने, सबसे अच्छी बात ये है कि मिलिंद जी ने अपना हाथ कहीं नहीं लगाया, वो उनके हाथ से करवाया, तो ये उनको काफी कॉन्फिडेंस आया कि अरे यार मैं भी कर रहा हूँ, मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ। नहीं तो क्या होता है, सामने वाला करता है ना, खुद करता है, तो वो चीज देखने में अच्छी लगती है लेकिन वो समझ में नहीं आती प्रैक्टिकली जब तक नहीं करते। बट ये आज उन्होंने प्रैक्टिकल करवाई। Very true. It was really magical. I'll say it was magical. बिल्कुल बिल्कुल। Here, Milind ji ne really hats off. तो मिलिंद जी आप बढ़िया से हमारा जो पावर क्वेरी का सेशन है उसका आप पूरा जो है ना, आपने कितने वो 1800 रुपए दे करके आप तो ये लाखों रुपए के सॉल्यूशन बना रहे हो सर, कमाल ही कर रहे हो आप। जी सर, इसीलिए आपको ऐसे ही बरगद का पेड़ बुलाते हैं सर। आपके पास खजाना है सर। अरे सर, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ लोग जो है इसको भाई आगे फैला रहे हैं, काफी इसको अच्छे से यूज कर रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, नई नई चीजें उसके अंदर इजाद कर रहे हैं, तो ये मेरे को काफी सेटिस्फेक्शन देता है। रियली बहुत बढ़िया लगा, एंड बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। जी सर, इसीलिए हमेशा मैं सेशन अटेंड करता हूँ विदाउट फेल। मुझे एक चीज भी नई सीखने को मिल गई तो मैं बहुत खुश होता हूँ, बहुत ही खुश होता हूँ। सही बात है जी, बहुत बढ़िया। मेरे को याद है आपने एक बार मेरे को वो दी थी, मेरे को एक बहुत बड़ी फाइल थी, उसके अंदर मैंने बैठ करके काफी टाइम लगा करके और उसका सॉल्यूशन बना के दिया था आपको, याद है आपको? 1-to-1 हमने किया। चल रहा है वो अभी भी, वो हाँ। में सॉल्यूशन चल रहा है बढ़िया से। ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू सर। विजय भाई जल्दी से रैप अप करें, लेस देन 1 मिनट के अंदर, ताकि लोग जो है अपना डिनर भी कर सके और जल्दी सोएं। कल हमारी योगा क्लास भी वैसे तो डेली होती है, अगर आप में से कोई योग क्लास से भी जुड़ना चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। बिल्कुल। सो अगर हम एक्सेल के चौपाल को अगर नाम देना शुरू करें तो मैं कहूंगा कि आज का नाम एक्सेल के चौपाल का रखा जाएगा कि मिलिंद कपाड़िया डे। Undoubtedly sir, it was an, you can say, like when Sachin plays, so it's an Sachin day. So Milind ji, आपने आज पूरा का पूरा like Shiv Kumaran ji has written that Milind ji is today's man of the match. Undoubtedly the two solution from Power Query is remarkable. और जैसा कि विजय अग्रवाल सर ने बोला, ये इतना उस अपने हाथ से भी नहीं किया, so that is very difficult कि you are handling a new query and that again you are not doing it from your hand,
So that's wonderful, sir. Milinji, I have so much respect for you earlier as well, but now I have become a fan of you. Undoubtedly, thank super solution, both of you, that made my day. और आज का सेशन अटेंड करने के बाद मुझे और ज्यादा फील हो रहा है कि I missed 2 sessions continuously. So Right, that's sir. great. So I really thank you everyone, and good to see your video is on now, sir. Milinji, you are hero today. And undoubtedly you are very passionate and you always join from continuously. Even ये बात there is तो a पक्का timing है। difference. Even there is a timing difference. We are in India, you are in Tanzania. What is the time in Tanzania right now? Right now it will be 6:50 in the evening. In the evening. So that's very good, sir, that you are joining by 5:30 there. So that's great. I really appreciate your commitment and the way you are really contributing. So ये एक्सेल की चौपाल में सर एक कहते ना कि हमारी ताकत है, तो आई एम वेरी मच ओवरवेल्म्ड कि मैं इस एक्सेल के चौपाल का हिस्सा हूँ. एंड वी हैव दिस काइंड ऑफ पर्सन जो ऐसी क्वेरी पूछते हैं और आप जैसे लोग हैं जिन्होंने इतना देर करके उसको किया. So let's not take lots of time. I am really this is the day 4th पर इतना बढ़िया हमने आज का दिन हमने देखा सीखा. And I hope हमारे साथ YouTube पे कई सारे लोग जुड़े हुए हैं that they are really replying that yes, this was a wonderful session. So I am really happy that more than 20 people were there on YouTube and around 20 people were there on Zoom. So yes, our family is getting increased and we are really happy. Thank you so much everyone for making this Excel query session so successful. Keep on asking this query. Just a simple request कि आप अपनी query जितना पहले पूछ लेंगे, you have our contact list. You Champ Excel पे जाके आप query पूछ सकते हो. आपके पास विजय सर का नंबर है. You have the mail ID as well, info@champexcel.com. You can just send their queries. उससे और फायदा होगा कि हम उस queries को पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे. So I really thank you everyone for joining now. You have made my day. मेरे पिछले 2 हफ्तों की पूरी वो चीज भी मिलन जी ने निकाल दी. Wonderful. Really thank you everyone for joining, for sharing queries and showing your interest. And I really thank your mentor Rakesh Arora ji, Vijay Agarwal ji and Milind Kapadia ji. So wonderful day today. So with these words I say thank you, good night, and keep on learning. That's it. Thank you all. Let's meet next week. Take care. Yes sir. Okay ji.